Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning. One second, let me know. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Uh, so, guys, nothing much in the news today. I think there is a flat day, probably something about tourism. Again, ITC have started new hotels. Radisson has opened few hotels in India again. And this one, food delivery picks up, Zomato and Swiggy have shown almost a 20-25% growth and is estimated to grow by around 20%. That's a huge increase in the sales. Suddenly, there's no specific reason that is given, but they have saying offerings like 99 stores, reducing minimum order value, free delivery, cold loyalty. So those all things have led to the increase in the food delivery. Second, there was a deal about Tata Motors and Mahindra, which has been called off. Shantanu has that about is that about cafe norms again? Something on the cafe norms. Tourism, I think there was something about tourism. I'll show you. There was in business standard, not exactly tourism based, but yeah. So, okay, so this was ITC. One second, I'll just tell you where was the tourism part. I think it was in the one second, it was business standard, yeah. Avinash is there. I think Avinash has written that news. Yeah. So the Delhi airport ranked the fifth busiest airport against in the Asia Pacific region. So that's a huge news that is coming up, and there are a few hotels which are around that airport. So it is mentioned in the luxury hotel this Leela Palace, Taj Palace, which is around ARR of 18,000. Leela is having an ARR of around 42,000. Upper brands, upper mid-scale businesses like Welcome Hotels of ITC, which is around 7 to 8 kilometers. Again, the two ITC hotels, one Lemon Tree Hotels, and the mid-scale upper mid-scale there is ITC, and in the mid-scale there is Lemon Tree. In the luxury space there is Taj and Leela. No Oberoi over here. It's ranked almost, see, fifth rank. So this is a good news that there you can see a lot of travels coming up. Today I saw a news which is not relevant to the markets, but in US there is a huge snowfalls in the northeast part of US, and New York was also mentioned over there, and that is why they have issued an advisory notice that there will be no flights. No. So flights have been called off. Roads have been shut off. They have, given holidays to the schools as well. So probably there's nothing to do with India, but the foreign travelers which comes to India might be impacted. And here, I think we specifically know that EIH and Chalet hotels are the one which have the highest foreign tourist visits. So might be a small hiccup. In US, all airline stocks and your tourism stocks were down 2 to 3% today. So this update. Okay. Now, okay. So, Kaustup, anything on the cafe norms to update? Yeah. Hi, sir. Good morning. Good morning, everyone. Hey, guys. So recently, cafe norms have been coming in the news for like past 4 or 5 days. Like majorly because on the end of the month, they are supposed to give the exact data for it. So Hmm. today there was an update about the EV side of cafe norms. So cafe norms, as you guys know, usually covers the CO2 emissions.
But there was a proposal like EV should not be considered as zero emissions. They should be calculated on basis of their energy what they emit. So the amount of electricity they take and whatnot. The article also provided some interesting data, like how exactly and why exactly it is relevant. And the fact that even today, like although today EV market is only 4% of total domestic sales, but in the next 5 years, by 2030, they are expecting it to be 15% of the total Okay. sales. Okay. Yeah. And for the total, like what is the total sales right now? It's around 4.5, it's around mota 5 million. So they are expected that total auto sales to be 6 million by 2030. So based on this data, they feel like EV impact is high. So they should also make sure that EV doesn't get some kind of neglect because of this. And the industry people should also focus more on making sure that EV requires less and less electricity because they can use the credits, by selling these EVs for other things. I tried to look up the information for credits, but I was not able to find like what's the amount of credit they will get per car sold. That information is not out yet. That will be all from my side. Just an update. Okay. Okay. Fine. I can have it. Okay. Ashish, anything on the deal? Sir, I've written about that multi-purpose vehicles. Yeah. So if you look at the 60 plus segment, 60 lakh plus segment, industry sales have jumped from 10,120 units in 2020 to 39,859 units in 2025. And at the same time, the segment share has nearly doubled to 0.87%. So this clearly suggests that premium is scaling faster than the broader market, and it reflects structural affluent demand rather than just cyclical recovery. And within this premium segment, luxury multi-purpose vehicles are quietly emerging as a meaningful segment. The volumes in this category have grown from 493 units in 2020 to almost 5x, which is 2,485 units in 2025. And buyers are gradually shifting away from traditional large SUVs towards comfort-led mobility. And rising household income and millionaire households and deeper premium penetration are supporting this sustained momentum. OEMs reinforces this behavioral trend. Mercedes-Benz reported 34% growth in top-end portfolio in 2025, and the V class, which they discontinued, and they are re-entering it at around 1.5 CR after initially testing high-end van viability within its 68 lakh launch in 2019. And at the upper end, the price ceiling continues to expand. The Lexus LM is positioned at 2.15 crores, while the Toyota Welfare is priced between 1.2 to 1.25 CR. And on an average, they sold about 100 units per month in 2025. So the widening price band from 60 lakhs to 2.15 crores reflects strong pricing power. And unlike large SUVs focused primarily on road presence, these luxury multi-purpose vehicles they emphasize more on lounge style seating, sliding doors, flexible cabin layouts, superior third row usability, recliner seats, and etc. And in dense urban settings, these are combined with interior versatility and it strengthens their appeal. So, with the segment share already expanding to 0.87% and volumes rising fivefold since 2020, this category has clearly moved beyond being just an experiment. So, in conclusion, I would say these consumer preferences shift towards discretion, comfort, and practicality. And with potential electrification over the next 3 to 5 years, this segment appears to benefit from this growth. But is there any companies which is listed? No, sir, as of now, no. So what is the purpose of taking this news today? Sir, I've been seeing a lot of these vans like from past 5, 6 months, so I thought I'll cover the news. But what is the point? If I'm an Uh, investor, what is the purpose of this news? no purpose, sir. Then there's no point at all. See, there's an update, fine.
But what should I do with this now today? Let's say if it is 8 a.m. in the morning, I have assuming that Ashutosh is an analyst, and I am expecting that he will tell something about the markets. And you are like, okay, fine, it's an update. I also read it. Now, All right, sir. I'll hmm, write something meaningful the next time. yeah, there is nothing because there's no listed space in this. Probably if you think that if there are some auto ancillaries who are providing probably some equipments to this, then it is fine. But I am not sure what exactly is that. No point, talking about this news. All right. Okay. Yeah, Shantanu, anything on this deal? Yes, sir. Yeah. Yeah. Good morning, everyone. Today I will be talking about the major export development in India automobile sector. Indian auto industry has received a significant export boost as Tata Motors and Mahindra secured rupees 25 trillion order from Indonesia. Under this deal, the two companies will supply 105,000 commercial vehicles with the delivery plan through 2026. This improve revenue visibility and capacity utilization for both companies. To Can you be a understand little this, loud? I cannot hear you. Can you be a little loud? yes, sir. To understand the scale in financial 2025, Tata Motors exported around 13,000 units commercial vehicle globally, and while Mahindra and Mahindra exported about 18,000 units. Compared to this, the Indonesia order is a very large. Mahindra has called its 35,000 units Scorpio pickup orders. It's the largest ever export deal. While Tata Motors will supply 17,000 vehicles, including Yodha pickup and Ultra 7.7 trucks. Indonesia chose the Indian automakers mainly because of the cost competitiveness, faster manufacturing capability, and proven commercial vehicle platforms. And conclude that this deal is a strong positive for both Tata Motors and Mahindra, extending their revenue, margins, and global presence, while also the highlighting the India's growing importance in the global commercial vehicle. Thank you. Shantanu, just give me a gist of this news. What was because I couldn't hear you properly. What has happened? India's Yes, sir. auto industry has received significant export boost as Tata Motors and Mahindra secured a 25 trillion orders from Indonesia. Okay. Yeah. So Tata Motors and Mahindra have acquired 25 trillion orders from Indonesia. In Yeah. this deal, probably there are commercial vehicles, two companies. Two Tata companies Motors. will supply approx 105,000 commercial vehicles delivered through. Okay, this improves visibility. Okay, to understand the scale in FY25. Okay, so Indonesia choose automakers because of the cost competitiveness, faster reliability, and proven commercial platforms. Anything else? और कुछ नहीं था क्या इसमें? Was the only नो thing? सर. या इस न्यूज में उन्होंने ना उस कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब उधर की जो अपोजिट से लोकल प्लेटफॉर्म्स उसका ही ज्यादा न्यूज है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इंडियन डील का कलेक्ट किया और फिर पास्ट का डाटा कलेक्ट करके कंपेयर किया. So what is this local? I cannot hear you. मतलब तुम्हारा mic बराबर नहीं है. Local think tank project का 2.3 billion hit. ये क्या है? What is this? सर जीडीपी इंडोनेशिया का, उसमें इंडोनेशिया के जीडीपी उसके कंट्री के जीडीपी के ऊपर उन्होंने बातचीत की है. Why? हेलो हाँ, क्यों? सर, वो कंट्री के लोकल जो कंपनीज है ना, वो इस डील के अगेंस्ट है, क्योंकि ये डील कैंसिल करके हमारे से ही हमारे जो कमर्शियल व्हीकल है वो यूज करें. तो ऐसा क्यों किया है बाकी इंडोनेशिया ने?
क्योंकि कंपेयर टू देयर मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर है ना, उनके प्राइजेस भी ज़्यादा है। और उनकी जो टेक्नोलॉजी और क्वालिटी है इस कमर्शियल व्हीकल की, वो कंपेयर टू इंडिया इज लेस। Continue on page 7 as well. पूरा पढ़ लिया हमने न्यूज़। हाँ, 7 नंबर पर है। इतना बड़ा न्यूज़ तुम्हारे से 4 लाइन में कैसे हो गया? ठीक है, फाइन। Okay. Guys, anyone else? Ankita, anything on? कुछ तो अपडेट ही था वैसे तो। Ankita. Okay, Ankita is not there today. Okay. Okay. Okay, anyone else? I think today there's not much news about it. मुझे स्पेसिफिक ही बताना था। वन सेकेंड। ये जस्ट एन अपडेट। Gurugram has taken over India as the Mumbai as the largest luxury market in India. कहाँ पे था वो न्यूज़? वन सेकंड, आई थिंक देयर वाज समवेयर पेज 16. Yeah, Gurugram beats Mumbai in ultra luxury home sales. So this is something to look at from a growth perspective, that the money is flowing from Mumbai to Gurgaon now, because Mumbai was considered to be the highest, no, the home for real estate, home for luxury real estate rather, but now it has shifted to Gurgaon. So, अच्छा यहाँ पे ना, see the average room size is around luxury, around 5,000 square feet, usually 4,000 to 6,000. अभी इसमें what I feel is beats Mumbai, it is on the sales. Abhi, the reason is that Mumbai में ना the square foot rate is much higher than Gurgaon. So ऐसा मत, मतलब ये लिखा तो है वो लोग ने, but it is in terms of sales लिखा है, it is not in terms of the cost. Mumbai में still it is a lucrative market which having the highest per square feet rate. Gurgaon में उतना रेट नहीं है। हाँ, लग्जरी है, let's say 55 करोड़ के जो घर है, it is, I think Gurgaon में 60,000 70,000 के आसपास है the luxury square feet, whereas Mumbai में it is around 1 lakh 1,10,000 पर। हाँ, ये लिखा ही यहाँ पे average prices around application average price climbed to around 24-27 per square feet. I think यहाँ पे लिखा था इसका, okay, not written. Somewhere it was written that the square feet is around 60,000. ये मैं last time मैंने calculate किया था, but this Mumbai में it is 1 lakh Research for 1,50,000. There's access, Sorry. like as long as you're connected to Wi-Fi, तेव्हाच असतो access. हो, Like घरी घेऊन गेलं तर नसेल ना? त्यासाठी VPN यूज करतो आम्ही. Okay. 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 Guys, anyone else कुछ पता नहीं? Because there is nothing today talk much about. Sir, I read this also, but मुझे लगा इसमें कुछ relevant नहीं है, and जो इसमें details given है ना, तो वो total sales पे है कि मतलब let's say जैसे कैमेलियाज में 190 करोड़ का फ्लैट सेल्स हुए थे, तो उसको इंक्लूड करके भी उन्होंने दिया। और अभी गुड़गांव में इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इस पे भी एक आर्टिकल आया था, बट आई एम नॉट, अभी नहीं है वो। नहीं, it is in terms of वो लोग ने luxury जो दिया है, it is in terms of the units दिया है, not in terms of the price. Okay, how many units are sold? हाँ, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 379% से इंक्रीज है। तो लग्जरी अपार्टमेंट सेल हुआ, तो ये मुंबई में 4-5-6,000 के स्क्वायर फुट के फ्लैट्स तो अप्रोक्सीमेट लग्जरी नहीं बोलते हैं, ऐसा भी है। अभी आई थिंक आई स्टे इन नॉर्थ ऑफ मुंबई, वहां पे भी एक बन रहा है विच इज अराउंड 4,000 स्क्वायर फुट, सो इट्स ओके। गुड़गांव में देयर इज अ स्पेस, ठीक है सर, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस बढ़ गया है, आउटपेसिंग मुंबई 21,000। ऑब्वियसली मुंबई हैज बिकम मच एक्सपेंसिव देन अदर प्लेसेस. So if you are working in Mumbai, at least you should have 1 lakh CTC, and competition is quite high. Today there is a job opening in Vapi, Gujarat. Equity research के लिए है एक opening. Anyone अगर कोई है गुजरात से यहाँ पे क्लास में? गुजरात? If it's, let me know. There is an opening in Vapi.
और फ्रेशर ही चाहिए उनको, CA CF है और मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। सर लोकली रिक्वायर्ड है? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ उनको लोकल रिक्वायर्ड है। प्रोबेबली, क्योंकि उधर 3-4 लाख ही देंगे, ज्यादा तो देंगे नहीं वो लोग। 5 लाख लिखा है अच्छा। मैक्स, 5 to 5.5 to 6 lakhs। पर गुजरात में ज्यादा नहीं है। वापी में तो आई एम नॉट श्योर, इट इज लाइक अ रूरल Tier 3 सिटी ओनली, तो नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसे ही कोई है गुजरात से तो बेटर टू वर्क, नॉट वर्थ लिविंग योर सिटी एंड गोइंग। ओके, ओके, okay, so I think today is a small call. We'll stop today as of now. I think there's nothing to talk much about it. ये एक और एक लग्जरी था, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल अगेन, ये भी था एक अबाउट Radisson coming up with luxury hotels in India. Again, Radisson is having a good growth. IMD inks packs with Radisson for 50 luxury and hotels. So again, luxury hotel demand in India is growing, and Radisson can approximate ARR was around 15,000, 15 to 20,000, 15 ke niche hi tha, probably not even 20,000. But now this is also having this company Radisson is also taking this thing into premium, and I can see that demand is growing across the luxury space. So the hotel sector is heated up. Probably there can be a recovery anytime. जब ये probably sector recovery होता है, the point the sector recovers, you should be ready with stocks की कौन से stocks लेने चाहिए once the sector recover, and उनके कौन से competitions है। Probably what I feel, IHCL तो है ही, IHCL is a leader। उसके बाद विंटेव looks better। विंटेव का probably आ रहा है, सब बाहर से आ रहा है, वो मालदीव से मेजरली आ रहा है। That is why they are having a higher ARR or maybe ref par। Oberoi EIH है, that is specifically into your राजस्थान फोकस है, राजस्थान एंड लीजर फोकस है वो। दैट इज व्हाई आई लाइक, बट उसका प्रॉब्लम क्या है, ARR इज क्वाइट हाई, तो मार्जिन भी क्वाइट है, उसके होटल्स भी है, तो वहाँ पे उसका EBITDA मार्जिन अराउंड 90%, 90-95%। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर ओबेरॉय। बट अभी देखना है कि हाउ दे स्केल अप, क्योंकि ओबेरॉय इतना एक्सपेंसिव होते हैं। अभी उधर जाते कौन है, तो फॉरेन टूरिस्ट ही जाते हैं बेसिकली वहाँ पे, इंडियंस को इतना अफोर्डेबल नहीं है। सैमी होटल्स है विच इज इन दैट रेंज ऑफ ARR अराउंड 10 to 15,000, विच द इंडियन मार्केट कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे तुम और मैं प्रोबेबली माइट गो। अगर हम घूमने जाते हैं तो 10-15,000 की रेंज में जाएंगे। ऑब्वियसली वी आर नॉट दैट रिच कि हम सीधा 50-60 हजार 50-60,000 रूम पर नाइट वी कैन अफोर्ड। सो दैट इज व्हाट आई लाइक। सैमी वो रेंज में है, चैलेट भी है वो ही रेंज में अप्रोक्सीमेट, एंड ये विंटिव भी है। दिस थ्री आई लाइक द मोस्ट। IHCL तो है ही। अभी इन तीन में से कौन सा अच्छा है, दैट यू हैव टू फिगर आउट एंड व्हाई। दिस इज व्हाट आई एम गिविंग। मैं बता दूं, ये तीन मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट अभी तक मेरे पास के पास कोई डेटा स्पेसिफिक नहीं है कि क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्या है उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्या है, कहाँ कहाँ पे उसके होटल्स है। आई एम अनश्योर अबाउट इट। दैट इज व्हाट आई वांट एनालिसिस फ्रॉम यू गाइस विद अ फाइनेंशियल मॉडल एंड विथ रिपोर्ट्स। तो हम जब ट्रैक करेंगे, लेट्स से इफ आई एम इन्वेस्टर्स, मुझे ये सब 3-4 कंपनीज पे ही रिसर्च चाहिए, है ना। बाकी की कंपनीज भी ट्रैक करना है, ये है जो चैलेंज में पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ओके। सर there's one update, just one update. ITC Hotels opened 30th Welcome Hotel in the Mohali with 113 keys. सर इसके बारे में ज्यादा कुछ डाटा पॉइंट्स थे नहीं, तो मतलब हाँ, ज्यादा कुछ दिया नहीं है कोई IT। वेलकम होटल्स का अभी तुमको पता होना चाहिए, वेलकम होटल्स का ARR कितना है, ओके। कितना है, क्यों नहीं पता है? सर मैं अभी वो लिस्ट कर ही रहा था, ARR लिस्ट बना रहा था। हाँ, आ गया ना ARR कितना है, पहले ही बोला था, फर्स्ट डे पे ही सब रिसर्च करना था तुमको। अपडेट नहीं, अपडेट सर नहीं हो उसकी रहा एक है। अलग लिस्ट बना रहा था, क्या हुआ? उसका एक अलग लिस्ट बना रहा हूँ कौन से होटल का कितना ARR है करके, तो वो भी हाँ, बचा है। you should have closed it. फर्स्ट डे जब तुम आते हो एज अ रीजनल एनालिस्ट, तुमको मैंने यही बताया था कि होटल्स का लिस्ट निकालो, एंड होटल्स के लिस्ट पे पता होना चाहिए, क्योंकि जब तुम न्यूज पढ़ोगे, न्यूज सिर्फ ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं पढ़नी होती है।
तो उसका वो तो फिर सभी पढ़ सकते हैं ना, तुम क्या अलग हो, तुम अलग क्या कर रहे हो उसमें? सब लिंक करने होते हैं। फिर एडिसन ये जहाँ पे खोल रहा है एडिसन, वहां पे कौन से ऑलरेडी है होटल्स। जैसे ये जो न्यूज था आज बिजनेस स्टैंडर्ड में, दिल्ली एयरपोर्ट का, तो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास कौन से होटल्स है तुमको पता होना चाहिए वो सब। तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए पहले ही। ओके। ओके, ओके गाइस, we'll stop here for today. Nothing much today. We'll meet again tomorrow. We will discuss more about it. So, guys, what I feel is there are only few people who are sending me the newsletters. तो आज वो जन नहीं है, तो probably किसी ने बताया नहीं है. I'm not sure why is that going on. अगर ऐसे ही चलता रहा तो जॉब मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा. If you don't prove yourself on a daily basis, it becomes difficult for me to refer you. Bharat has something. Chalet has already strong presence in the business segment. They are rapidly expanding to leisure. हाँ, आई थिंक भरत या बोथ आर फाइन. चैलेट भी है, सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन चैलेट. चैलेट भी है. जिसके एआरआर कम है ना भरत, आई फील दैट दोस कंपनीज आर मच बेटर टू लुक एट, क्योंकि ये लीला भी अच्छा है बट बहुत एक्सपेंसिव साइड पे है. EIH भी अच्छा है बट अगेन ऑन द वेरी एक्सपेंसिव साइड. ताज है, ताज के तो सब में ही है वो. बचे ये चैलेट, सैमी, EIH. हाँ करेक्ट, कोई चैलेट, EIH, सैमी, विंटिव. ये चार बचते हैं. विंटिव में एक है कि वो ओवरसीज में है, तो उसका वो मार्जिन्स काफी इम्पैक्ट हो रहा है वहां से बिकॉज ऑफ द हाई ARR इन द एक्सपोर्ट मार्केट. और कुछ नहीं. इसके लिए आई लाइक विंटिव. बड़ा स्मॉल है कंपनी, छोटा है, ग्रूम टू ग्रो. कंसिडर लो ARR, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई ARR, डेडलॉक. हाँ, हाई ARR का देयर इज अ प्रॉब्लम. हाई ARR इज अ नीश मार्केट, तो उसमें भी है. आई एम नॉट श्योर कि उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो खराब है कंपनीज. तो IHCL हो गया, ताज, सॉरी IHCL, लीला एंड योर ITC भी है उसमें. अभी ITC का भी वेलकम होटल, दैट इज गुड. दैट इज स्मॉलर, मे बी लोअर ARR. तो आई विल लिस्ट डाउन दिस ITC, लीला एंड योर EIH, सॉरी EIH, यस, ओबराय. ये सब आई विल स्पेसिफिकली इनटू द लग्जरी स्केल. एंड बाकी है विंटिव हो गया, देन इट इज योर चैलेट हो गया, सैमी हो गया, दैट इज इनटू लोअर लग्जरी स्केल्स. भरत या EIH इज आल्सो ट्राइडेंट, पर इसका मेजरली तो ओबराय से आता है. ट्राइडेंट उसका कम पार्ट है ओवरऑल रेवेन्यू देखा गया, तो मेजरली उसका लग्जरी सेगमेंट से ही आ रहा है, जो राजस्थान बेस्ड है उसका. वहां से उसका काफी ज्यादा मार्जिन और रेवेन्यू आ रहा है. ओके, okay, okay, guys, we'll stop here for today. We'll meet again tomorrow, guys. Please be keep sending your newsletters on a daily basis, वरना it has become very difficult for me. See, ये तुमने ना, I will tell you what has happened in the last 1 year of our training. The people who are active on the morning calls are probably the one who get placed the first. कि जितना तुम अपडेट करते हो, जितना तुम खुद को, ऑब्वियसली नॉट ओनली मॉर्निंग कॉल में रिपोर्ट्स भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं. द मोर यू अप्लाई, आर द वंस हु आर गेटिंग प्लेस्ड. वरना तो क्या है बेसिकली, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑल्सो प्लेस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं तुम दिन में कर क्या रहे हो. यू आर नॉट राइटिंग न्यूज लेटर्स, यू आर नॉट अपडेटिंग इट. टास्क दे रहे हैं, टास्क भी आई हार्डली गेट. few people are doing it. Neha, why don't you write? You do the task but you don't write newsletters. Why is it? Sir, actually, in news, there are very few news which have data points and which are relevant. I read the newspaper daily, but it's become difficult to find news which have data points. क्यों आंसर था ना, दे था, गुरुग्राम था, फूड डिलीवरी था, टाटा मोटर्स का था. देन इतने सारे तो न्यूज थे. Uh, I will look for it again next time better. इज नेहा, लेट मी टेल यू, इन माय 10 years Hmm. of career Hmm. ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हमारे पास न्यूज नहीं थे.
And Okay. तुमको ज्वाइन हो गया 10 दिन नहीं हुआ, तुम बोलते सर न्यूज नहीं है। Okay. तो इट इज, ऐसा कभी बोलोगे तो इट इज रॉन्ग। न्यूज होते हैं, तुमको पढ़ना नहीं Okay. है। 4 पेपर हो गए पढ़ के, 4-5 पेपर है और 500 पेपर पढ़ के हो गए, एक भी न्यूज नहीं मिला। इट्स नॉट पॉसिबल। यही था मुंबई का, ये न्यूज था गुड़गांव वाला। या ये भी था आईटीसी होटल्स का ही तो था, Mm-hmm. रेडिसन का भी तो था, विच वाज रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर, उसमें भी डेटा पॉइंट्स तो थे ही। From tomorrow, I'll do it. ओके गाइस, ओके, स्टॉप हियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू। Rishabh sir, हाँ, यस यस। yeah, Vedant here, sir. I just joined now. So I wanted to ask one thing. Like right now, I'm working and side by side doing the task. It's getting very difficult for me to manage both things. So like, what do you suggest for me, like to quit this job and then do these tasks, or See, I have simultaneously? done the same thing. If I am interested in something, I will put all my efforts to doing one thing and then see if it works or not. Probably Okay. it has worked for all. So It has what do you worked for suggest? me. I have done the same thing. See, because I don't suggest it directly is because probably you might be having some financial constraint and something Hmm. like that. So I cannot tell you ना कि छोड़ दो सब, छोड़ छाड़ के बैठ जाओ. Hmm. But अगर तुमको कुछ करना है लाइफ में तो probably you have to take 2 steps back. Then only you can move ahead. Okay. वरना it is, you can see research तुमको अभी difficult लग रहा है. What if, तो on that basis तुम अगर काम ही नहीं कर पा रहे हो, you cannot prove that you can work, then why will someone hire you? Hmm. है ना? Okay. So proof of work is very important in research. Yeah, IB roles, whatever roles you were. कल उसको तुम ये नहीं बोलोगे कि मैंने कोर्स किया है। कोर्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में। People don't get jobs because of courses. Investment banking roles में स्पेसिफिकली यू रिक्वायर्ड वर्क टू बी डन। जो भी एमबीए से भी जो प्लेस होते हैं ना, फ्रेशर्स बहुत रेयर है जो प्लेस होते हैं। दोस पीपल आर आइदर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, एंड रेफरेंस होने के बावजूद भी दे माइट बी हाईली एजुकेटेड, या उनके पास ऑलरेडी ऐसे स्किल्स होंगे जो तुम्हारे पास नहीं है। जैसे उनका एक्सेल बहुत स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, वो पहले से उनके स्किल्स हो गए, वो लोग ही प्लेस होते हैं। Yes. अदर्स को तो यू हैव टू अपग्रेड, Hmm. वरना इट इज डिफिकल्ट। लाइक आई एम डूइंग इट, बट मुझे इनफ टाइम नहीं मिल रहा है कि जो काम मुझे मैं एक दिन में करता हूँ उसके लिए 3-4 दिन लग रहे हैं, ऐसा हो रहा वो इतना तो एट द एंड वो इंटरव्यू तो कोई प्रूफ पूछेगा क्या किया तुमने 3 महीने। है। हम्म। तो तुम बोलोगे सर 3 दिन लगा मुझे टास्क करने को, मैं तो बोलूंगा ये तो टास्क आधे घंटे में होता है। जैसे मॉडल हम्म। बनाने का टास्क, मॉडल इज आई कैन मेक मॉडल इन 1 डे, बन गया, मैं तो 3 घंटे में, चलो एज अ फ्रेशर पे 1 दिन लगता है ज्यादा से ज्यादा मॉडल बनाने को। नहीं। देन तो 3 महीने में तो तुमसे कम से कम 40-50 मॉडल तो बना के होने चाहिए तुम्हारे, अगर इफ यू आर सेइंग दैट 3 मंथ्स में काम कर रहा हूँ। करेक्ट। मैंने खुद 20 मॉडल बनाए थे 1 महीने में। हम्म। को भी हो गया ना 1 महीना, तुमने कितने मॉडल बनाए, कितने नंबर्स पंच किए? यहाँ लाइक 5 कंपनीज के चल रहे हैं सर साइमल्टेनियसली पूरा। और कॉन्फ्रेंस कॉल कितने पड़े, क्या समझा तुमको 5 कंपनीज में हम्म। नंबर पंच किए तो? एवरी डे देयर इज एन अपडेट, कि हर दिन तुमको शाम को अपडेट देना होता है तुमने पूरे दिन में क्या किया। हम्म। ओके, यस। ठीक so है it is सर। recommended, to take 2 step back if you are actually interested, and you don't believe वेदांत, एक स्टूडेंट था, ही वाज, उसकी छोटी डॉटर थी, एक साल की, उसने नौकरी छोड़ा जस्ट टू गेट इनटू रिसर्च। 45 days, 45, 1-2 महीना बस लगता है, इफ यू पुट एवरीथिंग। मतलब हम्म। जितना मैंने जब चालू किया था ये क्लोजर, मैंने 6 महीने की बात की थी कि 6 महीना, मुझे खुद को नहीं गारंटी था कि मैं किसी को प्लेस करवा सकूं 6 महीने में, बस पता हम्म। चला 2-3 महीने काफी हो जाते हैं। अगर तुम कोई चीज रोज करते हो, टू हम्म। मंथ्स इज बिग इनफ, को बहुत ज्यादा टाइम है। और वीडियो तो सब है ही, तुमको सिर्फ अपडेट ही करना है, रोज तुमको सिर्फ आके बात ही करना है। द मोर यू स्पीक अप,
the more you become confident of speaking in the interviews. ठीक है सर, मैं डिसाइड करता हूँ अभी। ठीक, कौस्तुभ तुमने मॉडल बना के होगा तुम्हारे, कौस्तुभ? या सर मैंने आपको भेजे लाइक 4 एफएमसीजी के और 4 होटल के। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया? हाँ सर। अच्छा, मेरे को एक वापस भेजो ना एक बार, और हाँ तुम्हारा मैं एक सीवी बार भी भेज भेजना देता हूँ साथ में। वापस। हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारा सीवी भेजना वापस, और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी जो तुमने बनाए। हाँ रिपोर्ट्स में मैं अभी काम कर रहा हूँ, करके भेजता हूँ। हाँ नहीं, अभी जितने भी किए तुमने आज तक। ऑटोमोबाइल के भेजता था। हाँ हाँ। ठीक है। रिपोर्ट्स नहीं बनाए तुमने अभी तक क्वार्टरली? उस पे बैठा हूँ मैं, बिकॉज वो दूसरे बैच पे था और तभी एग्जाम चालू था। लाइक अच्छा अभी भी ओके। खत्म हुआ है ना, तो एग्जाम के टाइम मैंने कोई अटेंड ही नहीं किया। तो अभी तुम्हारा एमबीए खत्म हो गया या चल रहा है? हाँ खत्म हो गया सर। फेब ना, अभी तो चल रहा होगा ना, बट जून तक होता होगा ना? नहीं जल्दी खत्म हो गया। अच्छा ओके। तो करो फिर भी दिखाना हाँ है सर लोगों अभी की हूँ मैं घर एक्सपीरियंस पे है। ही। अज्यूमिंग तुम 2-3 महीने से हो साथ में है, तो 3 महीने का एक्सपीरियंस किधर है? एटलीस्ट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स ना, एक पूरे हाँ सेक्टर सर। का कॉन्फ्रेंस कॉल्स, मॉडल्स। तो वो होगा तो यू कैन प्रूव योर एक्सपीरियंस, वरना तुम बोलोगे सर मैं आपके यहाँ 3 महीना हूँ, प्रूफ किधर है 3 महीने का? मॉडल वॉडल है बस, वो कॉन कॉल के ही बाकी है बस। नहीं, कौन कौन नहीं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, कंपनी रिपोर्ट्स है, वो भी तो सब है। वही 2 चीज बाकी है बस। हाँ, तो वही 2 चीज तो थी इतने उसी को तो टाइम लगता है 2 चीज को। ओके ओके। हाँ, ठीक है। गॉट इट। डू इट एज एज घर पे बैठ के यही करो कौस्तुभ। चलो, मैंने तुमको 3 कंपनीज दिए ना, EIH हाँ। लिख के रखो। लेट्स आई गिव यू अ टास्क सिंस तुम घर पे ही हो। हम्म। EIH, चैलेट, विंटिव, EIH यह चैलेट चले। विंटिव, हाँ। नहीं सॉरी, नॉट EIH नहीं सॉरी, चैलेट विंटिव और सैमी। चैलेट, ओके सर। विंटिव, सैमी, ये 3 एक सेगमेंट के हो गए। ITC, IHCL, लीला और EIH। ITC, IHCL, लीला एंड EIH, ये 4 एक सेगमेंट के हो गए, बाकी के 4 दूसरे सेगमेंट के हो गए। एंड फिर लेवेंट्री है तो लेवेंट्री जाना दो, क्योंकि अभी तक उसका डीमर्जर चलने वाला है। तो ये 8 कंपनीज, तो आई वांट पूरा एनालिसिस कि 8 कंपनीज में से व्हाई डिड यू चूज अ स्पेसिफिक कंपनी। या तो सर। चारों कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल्स, सॉरी 8 कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल्स, एक क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सबके कंपनी प्रोफाइल, मॉडल्स, पहले मॉडल्स, फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल एंड देन क्वार्टरली अपडेट्स। तो यू कैन चूज 3-3, साथ में या। करोगे तो फायदा होगा। एक साथ कर, मतलब एक एक करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं। मतलब कॉन्फ्रेंस आई। कॉल तीनों का साथ में सुन लिया, हाँ। फिर कंपनी प्रोफाइल तीनों का साथ में बना दिया, ऐसा मॉडल्स भी तीनों का साथ में बना दिया। तो पहले ये 3 का साथ करो। गॉट इट मैं मॉडल्स करके चालू करता हूँ, फिर अब उसके हाँ बाद इसमें आता हूँ। हाँ, मॉडल्स, फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल एंड देन क्वार्टरली अपडेट। तो ये प्रोसेस होता है टू अंडरस्टैंड एनी कंपनी। गॉट इट। हाँ, सर आपके पास एक 5 मिनट होगा? लाइक मुझे हाँ बोलो। एक मॉडल दिखाना था। हाँ दिखाओ ना, मॉडल दिखाना था, हाँ दिखाओ, क्या दिखाओगे मॉडल में? एक ही मिनट सर। विजिबल है सर? हाँ। एक्चुअली ये मैंने MBA प्रोजेक्ट में किया था मेरे। तो मैं इस तरीके से बनाया था, 3 स्टेटमेंट मॉडल। देन इसका फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाया था। ओके। देन उसके बाद में डेट रिपेमेंट स्केड्यूल भी बनाया था इसका। देन इक्विटी स्केड्यूल्स, देन रेशियोज, बीटा कैलकुलेशन, डुपॉन्ट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और रिलेटिव वैल्यूएशन। ओके। एंड सिमिलरली उधर फिर इसके बेसिस पे ये 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाने के बाद में फिर रेवेन्यू ड्राइवर्स एंड देन इस फॉर्मेट में रिपोर्ट, 1 पेजर रिपोर्ट एक्सेल में ही बनाया था। तो इसी तरह से मैं अभी ऑटोमोबाइल्स पे काम कर रहा हूँ। तो ये सिमिलर वे में जाऊँ या थोड़ा शॉर्ट में जाऊँ? अगर ये वे में जाता हूँ तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन एंड सब लिंकिंग करने में। नहीं, तो पर्पस अभी तुमने आधा नहीं, नहीं हम जो कर रहे हैं
इट शुड बी अ रिसर्च नॉट अ मॉडल मेकिंग। मॉडल तो ठीक है, मॉडल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ। पर्पज है कि तुमको वो समझता है क्या कंपनी। वन पेज हम्म। रिपोर्ट नहीं होता है, रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। राइट। 30-40 पेज का रिपोर्ट होता है। नहीं, ये मैट्रिक्स वाले मतलब जैसे एन ओवरव्यू। तो हाँ। वही ना, क्या सी वेदांत, दिस इज वेरी सिंपल ना, कोई भी कर सकता है। हम्म। क्या किया तुमने इसमें, तुम्हारा क्या एक्सपर्टीज है बताओ। मैं तुमको राइट, चार इसमें क्वेश्चन मैं पूछूं अदानी के बारे में, पूछो अदानी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। करेक्ट। वो तो वही नहीं तुम बता पाएगा तो मॉडल का करूँ क्या मैं। राइट। तो कि फिर अदानी, सर। मुझे भी नहीं पता अदानी का रेवेन्यू आता कहाँ से। हम्म। तो ये फोरकास्टिंग डजंट मेक सेंस ना। हम्म। तो फिर सर मैं अभी फोकस मतलब बेसिकली किस पे करूँ, मॉडल भी बनाऊं या साथ में दोनों एनालिसिस करूँ, या पहले पूरा मॉडल बना लूं ऑटोमोबाइल्स का और फिर उस पे एनालिसिस करूँ? पहले तो मॉडल बना लो चारों में, फिर पहले तो वो होता है ना एनालिसिस की चारों कंपनी में फर्क क्या है। हम्म। अच्छा, उसके पहले तुमको चारों कंपनी पहले समझनी होती है। कंपनी प्रोफाइल पहले होता है, प्रोफाइलिंग पहले होती है। क्यों मेक राइट। कंपनी प्रोफाइल की मॉडल बना ही क्यों रहे, ऑटोमोबाइल चूज ही क्यों किया। राइट। ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जैसे अगर तुम कल बनाओ मारुति होंडा का बना के लो और वो सेक्टर चल ही नहीं रहा है, तो वैसे भी तुम रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में। हम्म। तुम इस पे रिसर्च कर ही क्यों रहे हो। किसने बोला तुमको रिसर्च करने को। मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। ओके। ऐसा है यार। यू ठीक है डोंट सर। अंडरस्टैंड द बिजनेस। सी कैसा हम्म। होता है मॉडल्स बनाना। तुमने आज अदानी ग्रीन का एग्जांपल दिया, तुमने अदानी ग्रीन का बनाया है। कैन यू हाँ। कन्विंस योर डैड टू इन्वेस्ट। हम्म। कैन यू खुद कन्विंस हो, जो भी वैल्यूएशन तुमने किया है उसके हिसाब से जाएगा कंपनी। मैंने अंडर वैल्यूड ही उसको मैप किया था हाँ तो बेस्ड करो, अपॉन द घर बेच फाइनेंस। के बोल डैडी को कन्विंस करो, डैडी हम घर बेच के स्टॉक लेते हैं। हम्म। कोई इंडस्ट्री नहीं पता क्या है, तुमको पता ही नहीं उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, किसको बेचता है, कौन उसके कॉम्पिटिटर। मतलब सोचो तुम ओनर हो कंपनी के, तुमको ये हम्म। 4 क्वेश्चन में पूछू कंपनी के, तुमको पता नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरे मॉडल बना है। रिसर्च काफी डीप जाता है। और पहले तो जितने अवेलेबल है, जितना प्रोडक्ट समझता है, उतने ही वही कंपनीज पे रिसर्च करना है। फिर डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। मैं करता हूँ एक्सपर्ट्स की बातें करता हूँ मैं कभी, है तो फार्मा आईटी के लिए मैं कर ही सकता हूँ ना। राइट। और मैं करता हूँ कभी, मैं अभी क्या पहले भी नहीं करने का कभी। अनलेस आई एम नॉट नोइंग द इनसाइडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, तब तक मैं तो बात ही नहीं करने का। फार्मा के भी इवन व्हेन आई वाज एन एनालिस्ट, आई हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। लोग करने के बहुत रिसर्च, बहुत कंपनी बोले मुझे नहीं समझता है कंपनी, मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई वाज नॉट इक्विप विद दैट काइंड ऑफ रिसर्च। जो सीनियर भी करने का, वो भी कितने बार मुझे बोलने का हाँ ठीक है ऋषभ, हम किसी और का सुन के स्टॉक ले लेते हैं। ऐसा था, और वो भी थोड़ा पोर्शन ही था, जस्ट बिकॉज द इंडस्ट्री इज डूइंग गुड। जैसे डिफेंस बढ़ रहा है एग्जाम्पल, तो हम वो डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के, जस्ट बिकॉज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। देयर वाज नो एनालिसिस ऑन दैट। तो ऐसे सब स्टॉक्स में यू कैन नॉट मेक बिग मनी, या यू कैन नॉट कन्विंस योर फंड मैनेजर। जब तक कन्विंसिंग आइडिया ना हो, तब तक उसमें मॉडल बनाना ही नहीं चाहिए। ओके। हाँ, मॉडल बना के रखना होता है एट द टाइम की जब ये सेक्टर रिवाइव होगा, तो यू नो यू हैव द मॉडल्स विद यू। मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर, उसको राइट। बनने में कितना टाइम लगता है ना, आधा घंटा, मुझे आधा घंटा लगता है बनने। That's it। ऐसा है, इन्वेस्टमेंट आइडिया जनरेट करने होते हैं, नॉट कि मॉडल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आइडिया जनरेट करके वो कंपनी पे मॉडल बना के तुम ये बता दो कि बाकी के 4 कंपनीज अच्छे क्यों नहीं है, हम्म। उस पर भी मॉडल्स होता है। क्या गॉट इट सर। गॉट इट। तो उसके लिए टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड, यू हैव टू गिव टाइम। ओके, ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Hi, sir. Do we have 2 minutes? जहाँ बचो, हाँ या सुरेश। Sir, actually, it's been a week since I've joined this module. हम्म। Uh, regarding, I have recently given my CFA L1. ओके। So as I'm not doing anything, so all my focus is into this research pattern learning curve. So हम्म। is there anything that you want to that you can suggest me so that
I can catch up. You are from which batch? EM16. So we have, we are doing it now. वो जो task दिए थे वो किए तुमने? No, sir. Actually, it's been a week since I've joined. I have just completed the first learning, that market tracker, and I've completed Okay, that part. So I'm just fine, trying to follow up. And fine, fine. I think it's been a couple of 1, 2 classes since I've joined morning session and evening session. Okay. Uh, Yeah. so Surya, probably what you have to do is, you have to come up with a research and come up with a research part where every day you should talk something new, which is linked to your previous work. So Okay. first is reading newspapers. So you have to start reading newspapers and write articles, newsletters, we say. Okay. And which industry we are following? Whichever Uh, industry you understand, which you think that you understand the products, you understand the companies, you have used the products, you know the competitors, you know the pricing, not to okay. take any random industry. Got it. So probably we have limited ourselves to auto, FMCG, Retail, retail, and hotel hotel. Yeah. currently, because hotel every time it is coming in the news. This other Mm, we yeah. have limited ourselves. If you think anything else, footwear भी है उसमें footwear का कभी कुछ आता है तो you can write about that. Yeah. And now we are focusing on hotel because that is the theme that is going on. Tourism is what the theme that is going on. But Yes. the theme can change to auto and FMCG as well. FMCG के न्यूज आना चालू हुआ है जैसे ये रिटेल का आज आया था अगेन जोमेटो delivery increases for Zomato. So FMCG has also started coming in the news again. Yes. Yes, sir. So you have to be prepared for all the news that is coming in the market. Got it. एंड जो भी अभी होटल के है तुमको सब डेटा डालना है अभी होटल के क्या था फर्स्ट सेशन में इफ यू सी वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर दिस होटल लोकेटेड व्हाट इज द प्राइसिंग Ye- ऑफ द होटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब तुमको Yes. पता होना चाहिए ओके Yes, sir. तो वो पहले एक लिस्ट बना के रखो कि इफ आई गिव यू 10 कंपनीज तो 10 कंपनीज का तुमको सब पता होना चाहिए कंपनी क्या करती है लोकेशन कहाँ पे है ARR कितना है ऑक्यूपेंसी रेट कितना है कितने होटल्स है इसके कितने कीज है ये सब चीजें तो बेसिक पता होनी चाहिए Got it, sir. ओके Okay, sir. Is there anything else that I can do along with नहीं completing कोई this टाइम लगेगा module? बहुत ज्यादा इसी को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा Okay. Okay. ओके नंबर्स डालो नंबर्स पंच करो कंपनीज के जैसे अभी मैंने Uh, आउटपुट को बोला yes, yes. ठीक है तो Okay. समझना मैं तुम्हारा फंड मैनेजर हूँ एंड मैंने तुमको रिसर्च करने बोला है ये 8 कंपनीज पे जो अभी लिस्ट किए मैं Yeah. तो यू कम अप विद रिसर्च जैसे मैंने फॉर्मेट दिया है पहले नंबर्स पंच करो फिर उसका कल हमने मॉडल्स भी अभी कल से ये वीक से मॉडल चालू करेंगे तो मॉडल Okay. बनाना ट्राई करो जितने भी नंबर ये सब पंच करके पहले तो मुझे फर्क बताओ 4 कंपनी में फर्क आता है मैंने कल समरी शीट बनाने बोली थी लास्ट Okay. सेशन में तो देख लेना वो समरी शीट कैसे बनानी है सब कंपनीज के एक शीट में सब डेटा होने चाहिए Okay. Got it. ओके फाइन Oh, okay, sir. Got it, sir. ओके Yeah, thanks. ओके गाइस सी यू टुमारो बाय बाय